So, I'll give you a little time in the beginning, and then, we'll want to kind of speed up the entire process. Question 15 is where I'll want to begin with. I'll seek your participation in the class. That's exactly how this class is going to be, up and running. At any point of time, you have any doubt, any question, you're welcome to ask your questions and doubts. I'm deliberately starting from question 15. Methyl ester reacts with ETMGBr. Methyl ester plus ETMGBr, and the product is a 3-degree alcohol, which looks like the following. A 3-degree alcohol, which looks like the following. You have 2 ethyl groups here and a propyl group here. So you have to find the ester. What is this ester? Methyl propane. Yes, please. Methyl propane. Option B, methyl butanoate. Is it Nandini, coming up with the right answer? Yes. Chalo. Methyl propanoate is a very common mistake. I keep on saying, if it is R C double bond O, O R prime, this is certainly going to react with 2 moles of ETMGBr. It goes without saying. It will react with 2 moles of R prime prime MGBr. I've said this in the class as well. And the product eventually would be, a couple of R prime prime. So, there's going to be a nucleophilic substitution followed by addition. So that's very aptly understood by the presence of 2 ethyl here. And the idea about the R C double bond O, the acid part of the ester, would certainly come from this R, which is PR here, which is propyl. Now, naturally, if this is propyl, the corresponding ester with PR here would be propyl C double bond O. It's already said it's a methyl ester. So I think I'm being understood. This is going to be the right answer. Now, if this is propyl here, mind you, with 314 carbon, it is a butanoate. It's methyl butanoate. Yes or no? बच्चे लोग हाँ ना बोलते रहो. We'll want to move on at some pace in today's class, and that would make it option B in the question you have at hand. Yes, we can move on. Methyl propanoate, I repeat, is a common mistake. It's going to be methyl butanoate. I've made it very clear that this would go, this would go, this would go. R prime prime would come in. A substitution followed by addition. And 2 ethyl here certainly is about the 2 ethyl, which obviously makes its way into the ester. And this PR is going to tell me the nature of the initial ester. So if this PR is out here propyl, the count would be 4 of the acid part of this ester, and I'm going to call it methyl butanoate, option B. Any doubt, any question, you can read it. Else we want to move on. Question 16. Question 16. Again, a routine, simple question. I've done this in the past. Question 16. You have a 3-degree alcohol, and very much in the theory class, I had given a hint about a question of this kind. Now, the question reads, this can be obtained, this can be obtained, this can be obtained. Before I kind of carry on, I think a little less light could be better. So I think this is better now. I think it's better now. So this can be obtained by reaction of PHMGBr with, and in this case I'll have to write the options. Ethyl carbonate. Now ethyl carbonate would certainly look like this. Option B is benzophenone, which is going to look like this. Option C is ethyl benzoate, which is going to look like this, ethyl benzoate. It's important that, you are able to draw the structures from the corresponding common name or IUPAC name.
all of these, and please go ahead, tell me which is the right answer quickly. All of these. 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 Am I getting to hear Ved as well? Ved, are you there in the class as well? Yes, sir. Okay, again, you have a typical husky voice which I hardly fail to miss. I hope you're keeping well. Miss you last day, 16D Delhi. Do I need to explain this, or are you all happy with this? A very typical J means kind of a question. Do you want me to explain this? This would go one by one. ये एक्चुअली ये होता है कि पहले पीएच माइनस आकर के जब इसमें अटैक करेगा और एक चला जाएगा, तो एक पीएच माइनस जाने के बाद में, एक पीएच माइनस लगने के बाद में A would become C. एक मोल pH MgBr would convert A to C. And as you understand, another mole of pH MgBr would convert this to this. अब ये चला जाएगा तो बेंजोफिनॉन बन जाएगा. I think I'm being understood. इसमें 3 मोल लगेगा, एक मोल इसको ऐसा बनाएगा, दूसरा मोल इसको ऐसा बनाएगा और तीसरा मोल इसको ऐसा बनाएगा. So all of these is certainly the right answer. I'm expecting everybody from my class to have done this. 16 was routine, 17 is a little tricky. 17, question 17. Now 17 is about which of the following gives two isomers of 3-degree alcohol? Which of these would give two isomers? And somebody who has got the right answer would feel free to explain the solution with his or her name. So two isomers when treated with pH MgBr or any Grignard reagent. Now the options are the cyclohexanone with a couple of methyl groups at 4th position. Again, cyclohexanone with one methyl group. Then simply cyclohexanone. And then what you have is cyclohexanone with 2 deuterium. सर बॉम्बे होगा क्या? बी. हाँ सर, बी. एक बार CH3 और H फिर उसमें switch कर. I mean, even if your answer is right, I'll want solid explanation of the same. I could hear yes to Sir. Rekha, Saudi ji. Yes, please. सर वो जब पीएच आके वहाँ पे लगेगा तो सर एक तो सिस बनेगा एंड एक तो ट्रांस बनेगा. I'm kind of agreeing with you. I'm seconding your opinion, and I think others who have come up with the right answer would have also thought so. चौधरी जी बोल रहे हैं, यस भाई बोल रहा है, और कौन बोल रहा है इसका आंसर? बी बॉम्बे. बी इज द राइट आंसर, बट आई वुड वांट मोर पीपल. यस प्लीज टेल मी नेम. वेद. वेद एंड और कौन है? सर अनिकेत. अनिकेत. दर्शित सर. Darshit, I'm yet to see your responses. I'm very happy. You gave me all the solutions in the WhatsApp group, so that was very commendable. I'm yet to see that. Okay, who would explain it to me? Chaudhary ji has tried his best. सर वो डिपेंड करता है कि रिएजेंट किस साइड से अटैक करे. तो अगर वो लाइक ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा तो ट्रांस बनेगा, और अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो सिस बनेगा. You're right. I mean, I'm going to buy this PHMGBr on this, PHMGBr on this. Could be this PH OH, or this pH. I think everybody is there with me. This sp2 carbon becoming sp3 carbon. This is a little different, but not very difficult. This sp2 becoming sp3, and the moment it's sp3, the two would have different names and would be two different compounds. Rather, I have to say there will be two different compounds and will have two different names. Only if I could have a way of differentiating. यहाँ पर देखो दोनों मिथाइल है, तो अगर यहाँ पर दोनों मिथाइल रहेगा तो एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर दोनों ड्यूटेरियम है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है. अगर कुछ नहीं लिखा तो दोनों हाइड्रोजन है. अब अगर यहाँ पर सिर्फ एक मिथाइल है, तो अगर ये मिथाइल ऊपर है तो ये हाइड्रोजन नीचे है, और ये पहले से तुमको कांस्टेंट अगर बता दिया है, then you see in this case you can say methyl and phenyl are sins or cis, whereas here this methyl and this phenyl are anti, one above and one below, the common plane. So I think most of you would have understood by now that certainly sp2 becoming sp3
and this pH and this OH having two different possible, orientations would be two different compounds only if this is in respect or, in terms of another group. In the sense, if both are hydrogen or both are methyl or both are deuterium, you can't discriminate between these two. They would be simply the same. But when you have a methyl here methyl and phenyl are same, here methyl and phenyl are anti. If you have still doubt, you can ask me in the right class. Else we'll want to move on. 17B Bombay. I would still want to know how many of you got it right. You can tell me your names right away. Reyes told me, Wade told me, Aniket told me, Darsisto told me. 4 names I have. Who else got it right? All right, these 4. It is a nice problem. It's a real nice problem. It is a nice problem, basic aptitude. Which of these cannot be prepared? Which of these cannot be prepared? Which of these cannot be prepared? I hope you're happy with the audio quality and it's pretty visible what I'm going to writing and what I'm putting up on the board, although you have a hard copy of the problem sheet. Using acid fluoride and Grignard. I would want more active participation on your part. सर दिल्ली है क्या आंसर? Option A answer. Delhi, sir. आंसर डी यार। मैंने आवाज पहचान रहा हूँ। रेयर है, वेद है, दर्शित है, और कौन है? सर आशुतोष। Nandini. आशुतोष, नंदिनी, who else? जल्दी से लॉजिक कौन बताएगा इसका? लॉजिक कौन बताएगा? सर इसमें एक्सेस में दिया हुआ है तो 3 अलग अलग ग्रुप नहीं हो सकता। अगर कोई भी चीज ऐड हो रहा है तो वो सेम ही ऐड होना चाहिए। 2 ग्रुप सेम होना चाहिए। हाँ 2 ग्रुप सेम होना चाहिए। ये होता है एकदम टू द पॉइंट आंसर। 2 ग्रुप सेम होता चाहिए, टू द पॉइंट आंसर। ये दर्शक भाई जो बोला है ना, कमाल की हो दो, ऐसे ही जवाब देने का। बच्चे लोग, तीनों अलग अलग नहीं हो सकता। ये चौथा वाला जो है ना, इसमें इथाइल, मिथाइल और फिनाइल लगा है। इथाइल, दिस इज ET, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज फिनाइल। नाउ नेचुरली दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज if it's a RCOCl, if it's a RCOCl, I'm writing here, if it's a RCOCl, if it's a RCOCl, if it's a RCOCl with a R prime MgBr, I've said this umpteen times, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ना, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ना, कम से कम 2 R प्राइम तो रहेगा ही रहेगा। ये दोनों R प्राइम सेम रहेगा, ये सबको समझ में आना चाहिए। पहला ये Cl माइनस को हटाएगा, वो एस्टर हो या एसिड हैलाइड हो या कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो एक्सेप्ट अमाइड, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन। So the very look of the question and the corresponding product would suggest D is not possible, because if you're treating an acid halide like an ester with a Grignard, substitution followed by addition would have 2 R prime same. These 2 are same. These 2 are same. These 2 are same. Now these 2 are not same. All the 3 are different, so D is not possible. I'm happy with people who responded. We'll want to move to question 19. 19 looks a little challenging, although I've done something of this kind in the class in the past. Kanhaiya Babu, thanks for joining. You are 20 minutes late in the class. I hope you can hear me loud and clear. 19. Sir, At is any it point of time, still people are joining. Yes, please. सर is it बॉम्बे। option B? बी आंसर है सर। हाँ सर। ये ऐसा है, मेरे को लगता है 4 CH2 है, फिर MgBr है। हाँ ऐसा है क्या दो? हाँ सर। THF याद है ना? THF याद है ना? THF फ्यूरान में 4 हाइड्रोजन डाल दिया, THF। हाँ
सर क्या होता है टीएचएस, क्या होता है सॉल्वेंट एक्स्ट्रा होता है, हाइड्रो सॉल्वेंट होता है। इसीलिए याद करो जब मैं इपॉक्साइड के साथ में रिएक्ट करा रहा था ना, मैं 5 मेंबर में नहीं गया था, 3 मेंबर 4 मेंबर के बाद मैं रुक गया था। अब मेरे भाई बात तुम लोग को समझ में आ रहा, तो समझ में आ रहा है। मैं जब ग्रिग्नार्ड और इपॉक्साइड का रिएक्शन करा रहा था, याद है मैं इपॉक्साइड में 2 कार्बन बढ़ा रहा था, फिर 4 मेंबर रिंग में 3 कार्बन बढ़ा, 2 कार्बन 3 कार्बन बढ़ा रहा था। बट टीएचएफ में मैं रिएक्शन नहीं करा, बिकॉज टीएचएफ के साथ में इसका दोस्ती हो जाता है। टीएचएफ में थोड़ा सा मीडियम जैसा बन जाता है। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बोलो। हाँ सर तो यहाँ पर क्या होगा, जो CH2 है ना, naturally I would want to write it like this: MgBr CH2, then CH2 whole thrice MgBr, और ये जो नेगेटिव है ये जा करके यहाँ पर अटैक करेगा, ये उसके यहाँ पर आएगा, ये उतरेगा, तो ये ऐसा आएगा। द वे आई हैव बीन डूइंग इट इन द पास्ट। यस और नो? yes, Yes. So I think it's going to give me a 5-member ring. It's going to give me a 5-member ring. It's going to give me a 5-member ring with an OH. And I think this is option B, Bombay. yes, कितना लोग का बी बॉम्बे आया बताओ दोस्त, कितना लोग का बी बॉम्बे आया है? sir, हाँ सर मेरा भी मेरा भी। मेरा भी सर मेरा भी सर। So we can move on. So far so good, I believe we'll want to move on. बच्चे लोग हाँ ना बोलो। मतलब पहले यहाँ पर एक कीटोन बनाना, मैं ना इतना करा चुका हूँ ये क्लास में कि अब मैं ना और इसको नहीं कराना चाहता हूँ। पहले यहाँ पर कीटोन बनाना, फिर एक इंट्रामोलिकुलर एक और अटैक करा देना, जिससे वो रिंग बन जाए। ठीक है, तो चलो हाँ ना बोलो। हाँ सर हाँ sir, ये जो 5-member रिंग बनेगा, that is because of both the Grignard groups one by one attacking this cyclic ester. This is a cyclic ester. साइक्लिक ईस्टर का एक नाम भी होता है, तुम लोग पढ़ोगे आगे। देयर आल्सो कॉल्ड लैक्टोन, देयर आल्सो कॉल्ड लैक्टोन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू रिपीट इन दिस क्वेश्चन और वी कैन मूव ऑन। ये थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा है यार, मैं ये 2 बार दिखाना चाहता नहीं, आई हैव डन दी समथिंग टाइप्स इन द क्लास, ऑल्दो आई कैन डू इट वन मोर टाइम। आई थिंक यू आर हैप्पी विद दिस, जस्ट वी कैन मूव ऑन। यस क्वेश्चन 20, नाउ लेट मी रीड क्वेश्चन 20। an ester with CS2 whole 5 सर एक MgBr बार वो whole वाला 5। लास्ट वाला बता दीजिएगा। कौन बोल रहा है ये? सर यश सुरेश। यस भाई, ये मैं कैसे बताऊं? गोल देख, ये तो सी डबल बॉन्ड हो जाएगा वापस, है ना? हाँ हाँ बोल। ये ऐसा होगा, देख मैं कैसे बनाऊं बता। मान ले 5-member रिंग है, मतलब पहले ये सी डबल बॉन्ड हो, CS2 होल साइज OH होगा। ये CS2 होल साइज OH कैसे होगा मालूम है? इसमें एक 1 2 3 CS2 OH है, ठीक है। मान ले ये सी डबल बॉन्ड O बनता है, ये मान ले सी डबल बॉन्ड O बनता है, इसमें 1 2 3 OH है, ठीक है। और इसमें आगे चिपका क्या है? इसमें आगे चिपका है CH2 1 2 3 4 MgBr। अब ये जो माइनस है ना, प्लस है ना, ये जाकर के एक रिंग बनाता है, ये बनता है 1 2 3 4 5-member रिंग। वो ये 5-member रिंग, ठीक है सर समझ समझ गया। रहा है? वो ये 5-member रिंग, ये जब जाके इसमें लगा, ये टूट के निकल गया, ये सिल्वर बॉन्ड हो है, तो इसमें CH2 OH ऐसे निकल गया। जो ये CH2 होल साइज OH मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और ये एक जब जाके इसमें चिपक गया CH2, फिर 1 2 3, ये वापस जाके आएगा, तो 1 2 3 4 5 member रिंग बन जाएगा, समझा?
हाँ सर समझ गया। क्वेश्चन 20 एग्जैक्टली वैसा ही है। क्वेश्चन 20 इज अ रिपीटेशन ऑफ द सेम। 20 भी वैसे ही है ना बच्चे लोग। हाँ सर। CH3 suitable bond OOEP plus CH25 MgBr whole coest। तो CH25 MgBr whole coest क्या होगा? MgBr CH2 फिर CH2 whole 4 MgBr। अब यहाँ पर क्या होगा? पहले ये नेगेटिव जाकर के पहले आंसर बता दो क्या होगा इसका। बॉम्बे। बी सर। सर बी। अब क्या है? CH2 मेरे को 5 लगाना है। 1 2 3 4 5 MgBr। अब ये नेगेटिव हो जाके मेरे को फिर यहाँ पे चिपकाने का, यही तो है। हाँ, तो ये ना सिंथेटिक हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये 6 मेंबर रिंग बनेगा। जो 6 मेंबर रिंग बनेगा उसमें ये OH लग जाएगा। जो OH बनेगा उसके बाद मिथाइल लगा रहेगा। तो एक पॉइंट पे जाकर के पूरा सिंथेटिक हो जाता है। ये प्लीज व्हाट इज द राइट आंसर? B. सर बी। बॉम्बे। Bombay looks good. Bombay looks good. I want to write question 21 now. I want to write question 21 now. ट्वेंटी वन से ना थोड़ा सा स्मार्ट स्मार्ट नया नया स्टीरियो केमिस्ट्री का फैक्ट चालू हो जाएगा। So if it is a CH3CHO and I'm promoting it to be a nucleophilic addition over an aldehyde product, ये पूरा बोर्ड क्लियरली दिख रहा है ना? मतलब हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन टेल मी, आई कैन मेक सम नेसेसरी एडजस्टमेंट, although so far I have not made any, but I think it's readable. Or you'll want to refer to, that remote Reshmi pure enantiomer method. प्योर एंथ्योमर का मतलब होता है भाई जी कि एक ही बना, कोई डेक्टिव एलिवियो में से कोई एक ही बना। डी 21 माय फ्रेंड। सर रेशमिक होना चाहिए। गिव मी अ मिनट। हाँ सर रेशमिक होना चाहिए। हाँ, ओके, सो वन मोर टाइम, it's not only about Grignard, it's about any reaction where suppose you have an aldehyde other than formaldehyde, and if it's a nucleophilic addition, if it's an R prime MgBr and hydrolysis, you know, if it's an sp2 carbon becoming sp3, Yes. nature will not discriminate between the two possibilities. It would be like OH, हाँ R, H, R prime, and its mirror image. So other than formaldehyde में प्रॉब्लम है, दो हाइड्रोजन हो जाएगा। other than formaldehyde, sp2 becoming sp3, sp2 becoming sp3, naturally ये और इसका mirror image दोनों बनेगा। It will become the rule of the game. It will become the rule of the game. Are you all there with me? बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। राखी, श्रेयस, तन्वी, शशांक, शिवांगी, श्रेयस, सुरभि, वेद, जय सुरेखा, ये मैं इसलिए करता हूँ कि अगर रात में किसी को नींद आ रहा है तो एक बार नींद खुल जाए। फिर से आदित्य, अनिकेत, कंसिका, अनुपम, अनुपमा, अनुष्का, आर्यमान, आर्यमान, यू बी वेरी क्वाइट दो। 22, आगरा ए। ए। 22 is nothing but a basic, understanding of the activeness of the active methyl group. एक्टिव मिथाइल ग्रुप CH3 सर NGBI डी 1 है मोल। राइट। क्या बोल रहे? मैं अभी ABCD में देखा ही नहीं हूँ।
मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अभी, मेरे क्वेश्चन पढ़ने दो। CH2 1 मोल, CH2 1 मोल। तो यहाँ पर CS में तुम लोग को याद है, मैं जब ग्रिग्नार्ड पढ़ाया था मैं बोला था कि ये ग्रिग्नार्ड का पहला धर्म है, ये इसका पहला धर्म है, ये इसका पहला कर्तव्य है कि अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिला, अगर इसको एक्टिव हाइड्रोजन मिला तो पहले अपना ये वो वाला धर्म निभाएगा, वो है हाइड्रोजन लेकर के एल्केन बनने वाला। फिर हना नहीं बोलते हो, हाइड्रोजन गया कहाँ गया, CH3 माइनस के पास, मीथेन बना, फिर हना नहीं बोलते हो बच्चे लोग। हाँ सर। तो पहला धर्म निभाएगा ये अपना एज अ बेस। एक्टिव हाइड्रोजन होने से ग्रिग्नार्ड खराब हो जाता है, ग्रिग्नार्ड खत्म हो जाता है। यू नो व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग इज, ये क्वेश्चन मैं क्लास में तुम लोगों को करवाया हूँ जहां पर मैं बोला हूँ कि कीटोन है और एक ईस्टर है और जो पहला मोल है वो कीटोन के ऊपर में अटैक करेगा, फिर इंट्रामोलर के ऊपर अटैक होगा, क्या 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 कहानी सुनाऊं, याद है सब? हाँ सर। इसी तरह का एक प्रॉब्लम में मैं ग्रिग्नार्ड का एक मोल को लेकर के पहले कीटोन में अटैक कराया हूँ, फिर इंट्रामोलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया हूँ, क्या क्या कराया हूँ, रिंग रिंग बनाया हूँ, सब कुछ कराया हूँ, पर उसमें एक्टिव मैथिलीन ग्रुप नहीं था। यहाँ पर एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है। So that way this is a nice problem, man. अच्छा क्वेश्चन है बच्चे लोग, क्या बोलते हो? ग्रिग्नार्ड का पहला धर्म क्या है? ग्रिग्नार्ड का पहला धर्म है कि एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा तो वो एल्केन बनाएगा, बाकी सब बात का बात, बाद में देखेगा कि कीटोन है, एस्टर है, क्या क्या होता है। The priority is, and I keep on saying this from the day I teach you preparation of alkane, Grignard acidic hydrogen this far and no further. इसके आगे कुछ देखने का ही नहीं। आगे बढ़ेंगे। 23 A with CH7Gi giving you B on hydration giving you pentyl alcohol. बताओ बताओ बताओ। प्रोपनाल। एसीटोन। प्रोपानॉल। Acetone. एसीटोन। दो आंसर मिल रहा है बच्चों, दो आंसर मिल रहा है, बोलो बच्चों, हेलो बच्चों, बोलो बच्चों, दो आंसर मिल रहा है, प्रोपनॉल एसीटोन, কোনটা হবে বলো? You know what's the key of solving this question? The key of solving this question is being able to draw third pentyl alcohol. See if you are drawing third pentyl alcohol like this or not. अरे हाँ ना बोलो। हाँ हाँ अगर सर। ये बना रहे हो थर्ड पेंटाइल अल्कोहल तो ये दिखेगा किसी C2H5 आगे किसमें चिपका है। ए वुड बी एसीटोन सी क्या कटा। लेट्स मूव ऑन। 24 तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। 24 तो मेरे क्लास का सारा बच्चे करके आ जाएगा। मैं ना अभी रिसेंटली क्या, मैं आज ही एक बार वापस एडवांस का पेपर देख रहा था 2023 और 2024 का। लास्ट 2 साल का मैं एडवांस का पेपर देख रहा था, संडे एग्जाम है तो अच्छा यहाँ पर दो है, एक बनाने का तरीका मैं पहला एक क्वेश्चन से समझ जाता हूँ। एंड नो व्हाट आई फिगर्ड आउट, आई मीन the questions particularly from organic, I mean if I tell you the question from Grignard which has come in the real JEE advanced 2023, अभी अभी मेरे को उसका एक्सेस नहीं है, बट अगर मैं भी कराऊं ना 1 मिनट में हो जाएगा सबसे। इतना हुआ बना कर रखा एडवांस एडवांस एडवांस। मे बी द लुक ऑफ द क्वेश्चन इज इंटिमिडेटिंग, बट मैं कल मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ करके आधा एक घंटा का एक रिकॉर्डिंग करके अपने सारे बच्चों को भेजूंगा जो लोग अभी एडवांस दे रहे हैं, ओनली टू मेक देम रियलाइज दैट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन लास्ट 2 साल में कितना सॉल्वेबल है, कितना सिंपल है। आई फिगर इट आउट a few hours today itself, because I look at questions one by one and I was just putting it together. एडवांस में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है अगर you had the right approach to it.
आई मीन आई कीप ऑन टेलिंग यू, कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट के बाद में सिंथेटिक हो जाता है, पीएच को लाकर के यहाँ पे चिपका देना है, दैट्स इट, जस्ट फॉर एंड नो फर्दर, दैट्स इट, ऑप्शन डी दिल्ली, आई थिंक एवरीबॉडी गॉट इट राइट, अदर वे अराउंड, 25, 25, 25, 25, यार इतना अच्छा आवाज आ रहा था, कहीं से बंद हो गया अचानक। Sir, option D. सर वो सी नहीं होगा 24 का? सर आप ए मार्क किए थे। 24 में मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सी होगा ना सर उसका? ठीक, सत्यवचन, सत्यवचन, तू बचा लिया मेरे को एक पाप करने से, सर ये सी थैंक एच यू सो थ्री एल मच। आई से क्या होता है? सी एच थ्री एल आई? CH3 भी एक ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड है, CH3 माइनस देता है, CH3 माइनस जाकर के यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है, और ऐसे ही बना देता है, जैसा बनता है ग्रिग्नार्ड के साथ में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये था ना 25 CH3 NGBR एक्सेस है, मेरे को लगता है ये अब सब लोग कर लेते हैं, ये मेरे को लगता है अब सब लोग कर लेते हैं, मतलब all students should be comfortable with this. I don't know why everybody is not responding, otherwise Delhi. you're so otherwise you're so vocal in डी। class. Option D. So A is also obtained by, A is also obtained by, A also obtained by. बोथ बी एंड सी। So you have propanol, CH3, CH2, CHO with CH3 NGBr, 2 moles of CH3 NGBr and hydrolysis. 2 moles here. जरूरत नहीं, 1 मोल मिलेगा। B यहाँ पर 2 मोल CH3 NGBr हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। C option D rather than B and C. यस सर। So come on, tell me. I mean, I would have want more people to participate. यही प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है, तुम लोग चैंपियन बन जाते हो, सिखाया मैं ही हूं और मेरा ही बात का जवाब नहीं देते, this is not helping because you will want to respond actively in the class. How many of you got it right? Please tell me your name right away. Raymond. वेद। Ashutosh. Obviously, I would want more people to come up with their names and there's something I've taught to the best of my abilities. यहाँ पर CH3 NGBr देने से CH3, CH2, CHOH, C2H5 बनेगा, वो डिफरेंट है। ए जो है वहां पे क्या होगा, एक एक करके ये दोनों चला जाएगा और ए इज नेचुरली दिस वन, ए इज नेचुरली दिस वन, वी ऑल नो ए इज गोइंग टू बी टर्सरी ब्यूटेनॉल, टर्सरी ब्यूटेनॉल बनेगा, वो यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। So naturally B and C look good, option D is right, and I think this is fairly visible. We'll want to move to the next question, which is question 26. I'll carry on till 11 or 11:10, and I would repeat, I would want your active participation. Which of the following produces hydrocarbon with Grignard? It could be as simple as the question which is going to follow right now. It could be as simple as this question, A. 26. Option A. ए ऑप्शन है। Option A. Which give hydrocarbon with Grignard reagent? And it could be as simple as I repeat this question, but I'll want your participation in the class. CH3, CH2OH, CH3, CHO, then, ketone, and finally, we have an ester. CH3CO whole twice. I think, you understand CH3CO whole twice is more of this kind. Naturally, is the right answer because this is the only one with acidic hydrogen. Fair enough. Next one, 27.
A. ए ऑप्शन है. तो 27 में क्या Option है, एक पर्टिकुलर हैलाइड में मैग्नीशियम ईथर दिया है. I'm happy, some of you are coming up with the right answer right away. But I would want more people to participate. And even if you have not done it in the past, I'll want you to give it a good try right now, because this is not difficult. This is not difficult. It's a 5-membered ring. And then you have a cyclic ether kind of a situation here, where, it's very much clear that this oxygen and, this particular bond is kind of shaded, and you have a methyl, which is certainly going into the plane of the board. You have to find B. What is B? To begin with, I'll want to write A is certainly the Grignard. And yes, how many of you got it right? Please tell me your names. How many of you got it right? Pravesh. वेद. Darshit. Ashutosh. Asutosh, Ved, Darshit, Nandini. Anyone else? Pravesh. Pravesh, Tanvi. sounds good. Yes, please, last one. कितना नाम है? So Tanvi. Tanvi. Very good to hear from you. Rest of you? Rest of you? Sir, Krishu. Crystal. Really good to hear from you. And what you need to do at the end of the day is keep it simple. ये अगर ऊपर से लगा है, ये अगर ऊपर से लगा है, ये अगर प्लेन ऑफ द बोर्ड है, एक एवरेज प्लेन के ऊपर लगा है, ये ऑक्सीजन अगर ऊपर है, आई कीप ऑन डूइंग इट इन द क्लास. ये यहाँ पर 2 मार्कर ऐसे रख दूंगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऊपर से लगा, तो ये जो नेगेटिव है, ये बोर्ड के पीछे से आएगा. दिस विल कम फ्रॉम बिहाइंड द प्लेन. दिस विल कम फ्रॉम behind the plane. And if it comes from behind the plane and this goes up, this will be a taste from behind and this will be above. The final product. And I think, I think this is really, really good scoring stuff. I think this is really, really good scoring of stuff. By this time, you should understand that if you start following organic chemistry, all right, it's as simple as it is. You'll have a carbon here, and to this carbon you have a methyl, and then a methyl. That's option A. Option A. Sounds good. I'm happy, some of you are responding properly. Rest of you need to be a part of it. 28 is a routine question. Methyl butanoate. At times, people make a mistake by drawing the structure incorrectly. I think you're happy with 27. Let's move on. 28. So, chalo. 28. Bombay. Methyl butanoate. बी. Option B. Sir, B. Bombay. Methyl butanoate. Now, first of all, you need to draw it clinically, all right? And then 2CH3MGBr. One of the easiest questions. I mean, I would want more names this time. I'm seriously wanting to have more names this time. How many of you got it right? Please quickly tell me your name. Darshit. Nandini. वेद. Ashutosh. I'm sure more people would have got it right. More than 30 people in the class. 5 names so far. Yes. It helps. It helps. It helps me when you respond in this online class. What's also important is, I have taken these questions from the popular sources, that you're able to relate this to the way it's written in the question. C3H7 COH CH3 whole twice. So, this is exactly what this is all about. This is the carbon, which is the carbon I'm talking about as this carbon. So this is C3H7 OH CH3 whole twice. So you also need to, understand these small little things, different ways in which a question can be put up. 29. How many moles of Grignard is consumed when it reacts with a given compound, Again, a typical J question. Number of moles of Grignard reagent that reacts with. Number of moles of Grignard reagent that reacts with. Bombay. Sir, 8. 8 more. 8. 8B. I mean, I'll rather prefer Agra, Bombay, Delhi, Calcutta for clarity. Sir, Bombay. 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 So around this time, I'm happy most of you are getting it right. I'm happy most of you are getting it right, and I could hear it from a few people. I think those who are not responding would also want to realize how it's important to be,
responding in an online class. I'm really grateful and happy for people who are responding. तो अजय जी बोल नहीं रहे अभी कहाँ पर हैं? सर दे तो रहा आंसर 2 to 4 तेरा भी आंसर वही है ना? हाँ सर 7 8 is the right answer. 8 is the right answer. We'll move on. Question 30. 30 अच्छा प्रॉब्लम है. 30 real good question. 30 जो करेगा वो take a सर lot of C6 सर कैलकाटा आ रहा था कैलकाटा, हाँ सर C6 So, getting the right answer right away is a moment of happiness for both you and me. How many carbonyls? How many carbonyls with a given formula? What is the formula? C5H10O 5H10O. How many carbonyls C5H10O with pH MgBr give racemic mixture? With pH MgBr give racemic mixture. This is a nice problem. Again, this is different but not difficult. And it's very basic stereochemistry which is required here. It's very basic. First of all, what I'll do is I'll write all C5H10. So what I've done it in the past as well. I think I've told you one way or the other of drawing all possible. पहले पास में बनाते हैं, फिर थोड़ा दूर में बनाते हैं, फिर मेरे को लगता है एल्डिहाइड 4 ही बनता है. क्या बोलते हो बच्चे लोग? कीटोन में पहले 2 पेंटानोन बनाते हैं, फिर 3 पेंटानोन बनाते हैं, और फिर मेरे को लगता है ये एक और कीटोन पॉसिबल है. मेरे को लगता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 1 2 3 4 5 6 7 सात ही बनता है ना बच्चे? और बन रहा है क्या? Now, if this is 7 possible carbonyl with C5HNO, well, I think you're all there with me. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. अब अगर मान लो ये CHOH होता है और यहाँ पर pH लगता है तो ये कायरल होगा. ये CHOH होता है और यहाँ पर pH लगता है तो ये कायरल होगा. ये CH होता है और यहाँ पर pH लगता है तो ये कायरल होगा. ये CH होता है और ये pH होता है तो ये कायरल होगा. ये OH होता है और यहाँ पर pH लगता है तो ये कायरल होगा. नहीं ये कायरल होगा OH नहीं लगता है होगा. और ये pH होता है तो कायरल ये नहीं होगा. कायरल नहीं होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. और ये OH होता है और ये pH होता है तो ये कायरल. होगा So out of these 6 only एक होगा जो कि कायरल नहीं होगा. Otherwise 6 is the right answer. Good to see so few people getting this right as well. 31. 31 is the next one. 31. 3 3 Then 31, what I'll do is value of x is कितना मोल रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, मतलब CL C double bond O O ATO या OET C double bond O OET हो या CO CL CL हो, they're all going to react with 3 moles of 3 moles. RMGBR to give you finally. So this 3 is understood. 3 moles are required. We'll move on. Question 32. 2 moles. और सर इसमें पहले OH का H से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था क्या 32 में? 32 मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरे दोस्त, मैं 32 बता रहा हूँ. 32 एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 32 में बच्चा थोड़ा सा गलती कर देता है, और जहाँ पर गलती कर देता है वो भी मैं इसीलिए क्वेश्चन बना करके प्रॉब्लम शीट में ले आता हूँ. कोई बात नहीं बच्चों, अगर गलती हो रही है तो कोई बात नहीं है, बट गलती से सीखना इंपॉर्टेंट है. पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. ये एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है, जहां से भी मैं उठाया हूँ, कहीं से भी उठाया हूँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा ही है. मैं क्वेश्चन बनाता नहीं हूँ, और अच्छा लगे चाहे खराब, मेरा काम है क्वेश्चन जैसा है वैसा ही प्रेजेंट करना. So this is exactly how it would have been in the source where I picked it from. And hey, if this is becoming OH and if this is becoming pH and if this is becoming pH, they're looking for X. Yes or no? Find X. That is the case. Huh? What is your answer? Tell me, what is your answer? सर सर 2 मेरा 2 आ रहा था.
2 आ रहा था सर। सर सर वो OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो GR? मान ले OH के साथ में वो रिएक्ट करता है, बन जाता है बेंजीन। वो तो उसका पहला धर्म है। मैं बोला सबसे पहले तो इसी के साथ में रिएक्ट करेगा, हाँ सबसे सर। पहले तो इसी के साथ में रिएक्ट करेगा, बेंजीन बनेगा। ये तो बनेगा ही बनेगा, नो डाउट, ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। उसके बाद और जो मोल्स है अगर इसके साथ में रिएक्ट करता है और मान लीजिए OMgBr बन गया, और ये CH2 C CH CH OMgBr बन गया। तो ठीक है। पहले 1 मोल अब मेरे रिएक्ट को किया मेरे और बात यहाँ 2 बताओ, मोल भाई रिएक्ट जब किया। OH बनता है ये भी तो हाइड्रोलाइज होकर ना OH बनता है, तो अगर ये रिएक्ट कर भी गया तो ये भी तो हाइड्रोलाइज होकर के OH बन ही जाएगा। सर तो फिर हाँ 3 हो सर, तो 3 मोल्स होगा। 3 हो जाएगा। 3 हो 3 मोल्स जाएगा। तो 3 पहले ही बोलना कॉम्प्लेक्स। चाहिए था, 3 मोल्स तो पहले ही बोलना चाहिए था, 3 मोल्स तो पहले ही बोलना चाहिए था। ये भी तो OMgBr ही OH बनता है, तो अगर ये हाइड्रोजन भी यूज होकर के एक मोल और खा गया होगा और वो OMgBr बना होगा, तो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे तो तुमको 3 बोलना चाहिए था, 2 को तुमको बोलना नहीं चाहिए था। 2 इज अ मिस्टेक व्हिच यू हैव डन, 2 इज अ मिस्टेक व्हिच यू हैव डन। I hope you're understanding me. Maybe this is the only reason this problem is finding place in my problem sheet and our discussion. That in the real exam you don't write 2. Hey, 2 is when you're thinking this is reacting and this is not reacting. But I told you ये तो पहला धर्म है ग्रिग्नार्ड का कि ये हाइड्रोजन के साथ में वो एल्केन बन जाएगा। ये एल्केन तो बन ही जाएगा, पर वो एल्केन बनने के बाद में जो बचा हुआ रहता है वो MgBr ऐसे ही रहता है, और ये भी तो MgBr ही OH बनता है। Vanishka, hope you can hear me loud and clear. Vanshika यस सर। rather, Vanshika, Vanishka पुरानी स्टूडेंट थी वो। Vanshika, hope you can hear me loud and Yes. clear. Good to see you. You know, joining the class when it's about to end. कितना बज रहा है? 11 बज गया क्या? क्या करें और चालू 1 मिनट रखें? बाकी है सर। क्या करें और चालू रखें? हाँ सर। सर आधा घंटा पढ़ा दीजिए। बाबा रे बाबा। अच्छा है, खुशी का बात है यार, वेरी रेयर केस कैन यू आर विलिंग टू गो एंड I'm feeling hungry. Which of the following Grignard is not possible? Which of the following Grignard is not possible? Which Grignard is not possible? Which सर डी Grignard दिल्ली, D ऑल Delhi. ऑफ is दीज। सर डी ऑल ऑफ दी, दिल्ली, All हाँ of डी these. ऑल दिल्ली। ऑफ दीज, डी दिल्ली। all of this sounds good because यहाँ पर SH है, सब में यहाँ पर एसिडिक OH है, हाइड्रोजन है जिसे रिएक्ट नहीं किया। यहाँ पर NH2 है। अनिकेत, अच्छा अनिकेत, अभी मैं समझ गया अनिकेत। और अपने सर ग्रुप से और कोई ज्वाइन नहीं किया? बाकी सब बच्चों बच्चों सा लेट से इन्फॉर्म किया हुआ एक्चुअली। मैं क्लास में बोला था ना, लेकिन हाँ सर, आप प्रियांशु बोले थे कि कोई, ऑनलाइन क्लास कराओगे। हाँ बट आज मैं एक्चुअली मैसेज बहुत देरी थी। फिर कुछ लोग का हैबिट भी होता है रिकॉर्डिंग देखने का, इसलिए रिकॉर्डिंग शेयर ही नहीं करूंगा। 33 में all of these with Grignard is not possible, all of these not possible because all have acidic hydrogen and Grignard आपस में खत्म हो जाएगा, मर मिट जाएगा। 34, 34, CBAD। मतलब सेकंड सर रो में हो आर जाएगा क्यू पी एस। CBAOD। हाँ सर, RQPS या हाँ CVAD। सर आर क्यू पी एस। COO, SCOO, SCHO, CSCCOO is ABCD in list 1 reacting with PHNGBr producing list 2. I'm writing it for the sake of it. I think you all have got it right.
Please tell me how many of you have got it right. Please tell me. Come up with your name. Please tell me how many of you got it right. All right, I'm having a little effort in writing it down. I hope it's visible. दिख रहा है ना सबको clearly? हाँ सर हाँ सर So A would go with R R A would go with R. R. A would go with R. क्योंकि यहाँ पर PHMGBR ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और एक और लगेगा, तो यहाँ पर टोटल 3 मोल लगेगा, और अगर 3 मोल लगेगा 3 तो pH लग जाएगा. QD A would go with R. B, Q Q yes please. Q Q B would go with Q. You know, this could be a case as well. जहाँ पर एस्टर से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, नेचुरली एक हाइड्रोजन ही रहेगा, ये अंडरस्टैंड नहीं, ये जाएगा, एक पीएच आएगा, और उसके बाद एक पीएच आने के बाद में जो बेंजल्डिहाइड बनेगा वो एक एल्डिहाइड होगा, उसमें एक और पीएच लगने से 2 मोल ही इवेंचुअली ऐड करेगा. यस और नो? सो बी वुड गो विद Q. C, P. P, it would have become PCA by now, you know, with formaldehyde giving 1 more carbon and 1 degree alcohol. And D naturally will give you S S. जहाँ पे एस्टर 2 मोल के साथ में रिएक्ट करेगा और 2 फिनाइल. Think we're happy with 34, 35, 35, SRQP. SRQP SRQP. SRQP. सर Sounds भी good. P से तो बेंजीन बन नहीं रहा. हाँ मैं सर एक बार लास्ट देखता वाले हूँ, से बेंजीन कैसे बन रहा है एक बार बता सकते हो? मैं एक मिनट बताता हूँ. वो एक्टिव PHMGBR है प्लस से ये सर एक्टिव मिथाइलिन एक्टिव ग्रुप है ना, H तो H हाँ प्लस निकल उससे के H वो निकल जाएगा बना तो उससे लेगा. बन जाएगा. बी में क्या है? PHMGBR प्लस बी क्या बनता है? 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसा ही ना? 2 डिग्री 3 डिग्री है लास्ट में बेंजीन. I hope my writing is understood by everyone. I mean, what I mean is, I hope it's readable. I hope it's readable. तो जब ये बेंजीन बनता है ना, जब PHMGBR से बेंजीन बनता है, all it calls for is the naphthalene hydrogen, है ना? हाँ सर, और वो P में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के में है. और वहां पर PQRS में ये अभी भी वो थोड़ा सा वो ब्राइटनेस बढ़ जाता है कि एवरी टाइम आई कम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. हाँ, प्लीज टेल मी. आई एम नॉट एबल टू लुक, आई एम नॉट डूइंग इट ऑन द बोर्ड. मेरे बीच सर में उतना से एक इंटेंस नहीं हो रहा. ओके ठीक है, मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ पोजिंग अ प्रॉब्लम टू यू ना? नहीं. नो सर. सर नॉर्मल ही है. मालूम है, 6 महीने से बोर्ड लगा के रखा हूँ मैं, इतना दिन से बोर्ड लगा, 8 महीना हो गया बोर्ड लगाए हुए, मैं कुछ नहीं करता हूँ. मैं कभी ना टाइम निकाल करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर डालूंगा, होपफुली इन द कमिंग वीक. But I think I'm able to, communicate with you very freely. And I think, once in a while, a problem solving class of this kind. And if you're all going to communicate, this properly with me, I can certainly solve more questions. आज 15 नहीं 20 क्वेश्चन हो गया, 15 से स्टार्ट की. So 20 questions in an hour is not bad. 20 questions in an hour is no bad, Almost 3 minutes, which is as good as the real exam, timing in say JEE advanced. बस इसकी बात खत्म करूंगा, बस इतना. मैं ये मेरा अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है. SRQP मेरे को याद है, तुम लोग बोल रहे हो हाँ सर, SRQP. SRQP. हाँ सर. फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एल्डिड एंड एल्डिहाइड, 3 डिग्री अल्कोहल एल्डिड कीटोन. एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेंजीन बनाता है. सो आई गेस अब जो लास्ट 15 क्वेश्चन है ये एक दिन किसी और लैब में करवा दूंगा, ठीक है? टोटल 50 है ना? हाँ सर. और तो मेरे पास जो सोर्स है उसमें 70-80 क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चन से बाद में दे दूंगा. We'll going to have another small little session of this kind.
Very going to kind of finish it off. But it was really nice on part of everybody who has attended and responded in the class. I'll end this class with thank you note and happy online classes in future as well. Jesse Vaditya, Aman, Aniket, Anupam, Manuska, Aryaman, peculiarly very, quiet in the class today. Asutosh, Savyak, Darshan, Dharya, Disha, Krishna, Pravesh, Priya, Priyam, Rati, Reyes, Rohit, Rudro, Tanvi, Sareen, Shashank, Shivangi, Seth, Suri, Vanshika, Ved, yes. Sorry if I have not pronounced somebody's name properly. Good night. Sleep well. Stay happy. Stay healthy. God bless you. So thank you, Good sir. night, Thank you, sir. sir. Bye, Good sir. night, Good night, sir. sir. मिलते हैं बच्चे थैंक लोग यू को। सर। सर एक डाउट God था, bless. अभी पूछ लेगा कि क्लास में कुछ फोन कर. You can call me. अभी फोन कर. फोन करें